सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। आज का हमारा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानने जा रहे हैं। एंड ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट ग्रोथ के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द ऑक्सिन. So before starting about the physiological effects of the auxin, let's learn something about small information about the auxin. So do you know what कि auxin first कहाँ से isolate हुआ था? ऑक्सिन को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से. यस, यू आर लिसनिंग राइट. द ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन and the term auxin is applied to the indole 3 acetic acid or IAA itself. Okay, so IAA is a natural auxin and there are other synthetic auxins also. We will learn about these in the later. So first of all, let's learn about the physiological effects of the auxins, and then we will discuss about the synthetic auxins and its discovery. So as you can see, that the first physiological effect and the most famous effect is the apical dominance of auxin, which is the characteristics function of it. In this picture you can very clearly see the how auxin is working, and the auxin transport induces the apical dominance. And तुम्हें और एक चीज़ पता होने की ज़रूरत है that the auxin is generally produced by the growing apices of the stems and the roots, from where they migrate to the regions of their action. So apical dominance एक ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है. इसके वजह से टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में भी बहुत हेल्प होता है. एंड अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन इज द सेल डिवीजन एंड द सेल एनलार्जमेंट. Third is the root initiation. Fourth is prevention of premature abscission of plant leaf. Fifth is the flower initiation in pineapple. एंड सिक्स्थ इज पार्थेनोकार्पिन टोमेटोज. इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना. सेवेंथ इज द सिलेक्टिव वीड किलर इन द डाइकोट प्लांट्स. इट्स 2,4-D एंड 2,4,5-T. इसे एजेंट ऑरेंज भी कहता है. इससे ना वीड फ्री लॉन्स मेक करने में बहुत हेल्पफुल होता है. मतलब वीड फ्री लॉन जब भी किया जाता है तो 2,4-D एंड 2,4,5-T जैसे सिंथेटिक ऑक्सिन्स को हम लोग यूज़ करते हैं. देखो, हम लोगों को पता है कि जो नेचुरल ऑक्सिन होता है उसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, और IAA. बट जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं ना वो होता है NAA, 2,4-D, 2,4,5-D. ये सारे सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं. एंड ऑक्सिन के एक टेस्ट भी होता है जिसे कहते हैं एवेना कार्बेचर टेस्ट. सो एवेना कार्बेचर टेस्ट इज रिलेटेड टू द ऑक्सिन. इसे अच्छे से याद रखना फॉर योर MCQs क्वेश्चंस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिस्कवरी. So Charles Darwin and his son Francis Darwin tested the coleoptile of the canary grass and its unilateral illumination phototropism. Okay, so ये सारे इस experiment से related है, and this experiment used to demonstrate the tip of coleoptile is the source of auxin. ठीक है. तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ से उन लोगों को इतना पता चला था जो कलियोप्टाइल का जो टिप है, कैनरी ग्रास का जो टिप है, वहाँ से ऑक्सिन का एक सोर्स है. इसलिए क्या होता है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, तो इसे वन टाइप ऑफ फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं. बट चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने ऑक्सिन आइसोलेट नहीं कर पाए, तो उन लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही किए थे कैनरी ग्रास के ऊपर. बट F.W. वेन ने फर्स्ट टाइम ऑक्सिन को आइसोलेटेड किया था, ठीक है. लेकिन यहाँ पर ही नहीं, ऑक्सिन को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, ठीक है. तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने आइसोलेट नहीं किया था, तो आइसोलेट किसने किया? F.W. वेन ने किया. बट फर्स्ट टाइम आइसोलेट कहाँ से किया गया था? ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन का किया गया था. ऑक्सिन का फर्स्ट टाइम आइसोलेशन कहाँ पे हुआ था? ह्यूमन यूरिन पे. सो इसे याद रखना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इससे कंफ्यूज. नाउ लेट्स सी अबाउट द plant hormone gibberellins. So first let's learn its discovery. So the Bakane or the fully seedling disease of the rice seedling was caused by a fungal pathogen called the Gibberella fujikuri. Okay, and E. Kurosawa in 1926 reported the appearance of symptoms of the disease in a rice seedling when they were treated with sterile filtrates of fungus, and the active substance were later identified as the gibberellic acids. So the fully seedling disease or the Bakane disease, it's related to the gibberellin, and the Gibberella fujikuri is a one type of ascomycetes, तो इसे याद रखना.
Now let's learn about the physiological effects of the auxin. First is the stem internode elongation. It's the characteristics function of the gibberellin and it's a bolting effect भी कहते हैं. Second is the elongation of genetically dwarf plant. ठीक है. And third is the seed germination, hydrolyzing enzymes like the alpha amylase and the lipase and proteases, and then it do the breakdown of the endosperm. Other physiological effects of the gibberellin is the fruit and the flower enlarger, and it's happening in the apple को enlarge करते हैं gibberellin, and in fermentation में भी gibberellin बहुत ज़्यादा helpful है, and gibberellin also increases in the height of the sugarcane around 20 ton per acres, and it helps in the senescence and the juvenile conifers. Okay, so these are the physiological effects of the gibberellins. Now let's learn about the cytokinin. Now first let's learn about the discovery of the cytokinin. So what happened? F. Skoog and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus proliferated only if, in addition to auxins, the nutrients medium was supplemented with one of the following: either extracts of the vascular tissues, or yeast extracts, or coconut milk, or DNA. So Miller et al. In 1955 later identified and crystallized the cytokinases promoting active substance that they termed kinetin. Okay, cytokinins have specific effects on cytokinases and were discovered as kinetin from the autoclaved herring sperm DNA. Kinetin does not occur naturally in plants. So from where the cytokinin first isolated? It was first isolated in the form of gelatin from the immature corn grain. So इसे याद रखना, फर्स्ट टाइम कहाँ से इसे आइसोलेट किया गया था एंड इसका नेचुरल फॉर्म क्या है और सिंथेटिक फॉर्म क्या है. Now let's learn about the physiological effects and applications of cytokinin. Its first physiological effect is the cell division and cell enlargement, that is the effects on cytokinesis. Second is the morphogenesis. So let's see. The high auxin and low cytokinins promote the root formation, but low auxin and high cytokinins promote the shoot formation. Its third physiological effect is the counteraction of the apical dominance or the lateral bud formation. It is one of the famous physiological effect of the cytokinins. Now let's see the other physiological effects also. In other physiological effects, the cytokinins have the effect on breaking the dormancy of the seeds, and in seed germination, delay in senescence, that is also called the Richmond-Lang effect. It promotes the femaleness and the flowering in the short day plant, also in the long day plants, and induce the stomatal openings. These are the physiological effects and applications of the cytokinin. Now let's learn about the physiological effects of ABA or abscisic acid. The first physiological effect, it induces the senescence and abscission, induce the bud and seed dormancy. Third is the stomatal closing, and ABA is also called the stress hormone, and also it is called antagonistic to GS or anti-GS भी ABA को कहते हैं. So इसे याद रखना अच्छे से. Now our last hormone but not least, it's called ethylene, or ethylene is a gas. Okay, so ethylene can be included in both growth promoter and the growth inhibitor, but mainly it is a growth inhibitor hormone. Now let's see its the physiological effects. It is used in the post harvest ripening of fruit. Second is the stimulation of senescence and abscission of flower and fruit. Third is synchronizing the fruiting in pineapple and flowering in mango. Fourth is the triple response on stem, apical hook formation, seedlings, swelling in axis, horizontal growth of seedlings. So ये था कुछ आज हमारे प्लांट हार्मोन्स के बारे में. तुम लोग एक बार अगर नोट बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट बना लेना एंड समरी को एक बार पढ़ लेना जो कि एनसीईआरटी से ही लिया गया है. थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए. तुम लोग एक बार वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो एंड इट्स अ रिवीजन वीडियो, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू फॉर द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.